नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को लेकर के बात करें तो टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज नेचर ऑफ ज्योग्राफी और what we can do in geography to get good score. Linkage with current affairs, okay? Okay, that is very good. देखो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इफ यू रीड एनसीईआरटी class 11th, the first NCERT of class 11 for part 1, first chapter, it says that geography is essentially what? Geography is spatial science. And second, it says that geography is an integrative science. ठीक है, दो चीजें बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं. इट इज अ स्पेशल साइंस एंड इट इज एन इंटीग्रेटिव साइंस. होता क्या है कि मैं स्टूडेंट्स को क्लास में ये तो काफी हद तक सिखा देता हूं कैसे इंटीग्रेट करना है, एंड बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द थ्योरीज you will be able to link. But what I am unable to do in the classes is teach them this, the aspect of spatial science. Why? Because this is something which will start from rote learning. ये कहाँ से स्टार्ट होगा? रोट लर्निंग से स्टार्ट होगा. लाइक जब हमने पढ़ना शुरू किया था पहले, तो कैन वी से दैट वी स्टार्टेड फर्स्ट विथ ABCD और रट्टा ही मारा था. सो हर सब्जेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है रोड लर्निंग का. और यहां पर भी दिस इज द स्टेज ऑफ स्पेशल साइंस. ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं. क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, असेस द नहीं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं. कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना है? दिस डिस्प्यूट इज largely between Karnataka and Tamil Nadu. So Kaveri water dispute. Most of the students क्या लिख के आएंगे उसमें? The political aspect of the dispute. ठीक है, which is, अगर हम ज्योग्राफी के सिलेबस में देखें तो can we say political geography is just one aspect of geography? There are many other aspects of geography, economic geography, physical geography. ठीक है, इकोनॉमिक में भी एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, सेवरल पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी आर देयर. ठीक है, अब सपोज करो कि मैं इसी आंसर को, अगर मेरी थोड़ी सी अच्छी मैपिंग होती, मेरी एटलस की स्टडी बहुत अच्छी होती, सपोज आई हैड स्टडीड द एटलस प्रॉपरली, और एटलस में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि जो मेन जो एंट्रीज वाला मैप होता है उसके एंड में थीमेटिक मैप्स होते हैं. देखा है? Where there is the lithological map is given, water availability map, drainage map, climatic map, agricultural maps, population density map, सब दिया हुआ है. सपोज मैंने वो अच्छे से कर रखा था. ठीक है, कैन आई टेक अ लीफ आउट ऑफ दैट and talk about what could be the reason for this dispute? Can I say the primary reason for this dispute will be water scarcity? यही रीजन होगा ना. अब मैं अगर वाटर स्कार्सिटी के रीजंस में जाने लगूं तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले आई विल हैव टू लुक इनटू वाटर अवेलेबिलिटी. ठीक है, और उस वाटर अवेलेबिलिटी में मैं क्या देखूंगा? फॉर एग्जाम्पल आई विल लुक इनटू द कावेरी रिवर रिजीम, उसका रिवर में कितना वाटर होता है इन अ ईयर, आई विल लुक इनटू दैट.
Then I will look into the water demand. And when I look into water demand, will I look, if you are aware, in India, 82% of the total demand comes from irrigation sector. Okay? So can I say I would look into the cropping pattern, that is agriculture of that area? If suppose agriculture is more commercial type, more green revolution oriented agriculture. Green revolution agriculture की खास बात क्या होती है? It requires lots of water. It is water. It uses water intensive crops. ठीक है? So if I write and in fact show in a map cropping pattern of the area, also if we look into the water demand, second very important sector which uses water is domestic sector. अब domestic sector में भी tell me which is using more water, urban areas or rural areas? Urban areas in domestic. For example, rural areas में people use per capita, the water used is very less. Urban areas हमने क्या किया? Flush किया. How many liters of water gone? So per capita use of water is very high in urban areas. So cropping pattern and urbanization levels of that area. Will that tell me about the domestic water use? Obviously it would do. And इसके अलावा और कौन सा सेक्टर होता है जो वाटर यूज करता है? इट इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्रियल centers, important industrial centers. And you know, in this area lots of iron and steel industries for example are located, which use very large amount of water. ठीक है? Other food processing industries are located, which again are using lots of water. Textile industries are located, again are using lots of water. Chemical industries are located, pharmaceutical industries are located, again they are using lots of water. ठीक है? तो ये तीन चीजें मुझे पता है. अब मैंने ये सब कुछ मैप के थ्रू वहां पर एक्सप्लेन कर दिया. Will by my answer fetch much better marks? Because first I have shown the root cause and then I am showing that superimposed over this is the politics, the regional politics which is involved, which is again related with the language barrier which is there, the political barrier, the states which are there. So then I will talk about the political aspect. अब ये कैसे कर सकता था मैं? How I could have done that if I didn't had this part very strong. ठीक है ना? तो ये जो पार्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है? इट इज एन एरिया विच दे लैक. ठीक है? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल बी फाइंडिंग so many students would not do well in the examination, or there is objective evidences available with us that those students who had good spatial understanding they got good marks. Like छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने एक अपना ऑब्जर्वेशन देखा, मेरे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं, दैट दोज हु कुड ड्रॉ गुड मैप्स, एक्यूरेट, गुड से ज्यादा बेटर है एक्यूरेट मैप्स, लिटिल बिट एक्यूरेसी. और एक्यूरेसी देखो प्रैक्टिस से आ जाती है. यू डोंट हैव टू ड्रॉ ब्यूटीफुल मैप्स, एकदम एक्यूरेट मैप. एक्यूरेट मैप का मतलब है पैटर्न्स एक्यूरेट होने चाहिए जो आप शो कर रहे हो. एंड दोज हु कैन डू दैट, हु कुड डू दैट, they got very good marks. So this part is something
which you have to develop that. ये foundation majority of students का missing होता है. And this is one of the reasons they will later face lots of issues in, in paper 2 there is a question on mapping. 20 marks का ही आता है, weightage बहुत कम हो गया. पहले it used to be a full question 60 marks question, but अब weightage बहुत कम हो गया. Still it is there, and so many students would just think कि 20 नंबर का ही तो क्वेश्चन है यार, 20 नंबर का तो छोड़ भी सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है. But when you are leaving that 20 marks, what is actually you are doing is, वो direct 20 marks है, लेकिन indirect जो उसका relevance है, it is huge. It is very very huge. It will give you the ability to manipulate your answers the way you want. इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया कि assess the potentiality of Bihar for the development or for its development as agro-industrial hub और agro-industrial region. क्वेश्चन आया. अब वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास कोई फ्रेमवर्क वाला आंसर ही नहीं था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है कि अगर हमें इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट वी नीड टू डेवलप इंडस्ट्री. वन इज रॉ मटेरियल, बट raw material in itself, is it sufficient? Definitely not. There should be other things also available, like for example, do we need good transportation networks? We do need that. Do we also need other things like, yes, labor is another thing we would need. Do we also need some industries, the nature of industries is that they are not they are not spread. Can we say large scale industries are located at certain centers, and already certain center will have its own potential whether an industry can be established there or not. इंडिया में कई बार बजट स्पीचेस में सुना होगा कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे. एज अ पॉपुलिस्ट मेजर्स the government will announce many places industries would be set up, but in subsequent years we will find that they couldn't succeed. The industries became failure because they were not objectively based upon the locational analysis. ठीक है, so can I say there will be set of important growth pole centers or growth poles in which the industries would be set. ठीक है, अब तुम सोचो कि मैं ये सारे फ्रेमवर्क्स पर आंसर लिखता हूं, और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड इज अनदर फैक्टर, एंड one of the aspect of demand is export. So for export, do we need a port nearby? Which port is there? It is Kolkata. So मैं ये सारी चीजों को इंटीग्रेट कर रहा हूं. I am telling which are the main national highways which are there, which is the main railway line, for example, which is passing through that area. What is the density of roads, the surface metal roads which is connecting the, because we are talking about the agro industrial region. What is the cropping pattern, which type of crops are grown, what is the potentiality of more commercial crops to be grown in that area. Also I will talk about what are the challenges, like सबसे बड़ा challenge बिहार में क्या मिलेगा, to change the cropping pattern, because most of the small and marginal farmers are located in where? So many are in Bihar. In Bihar, majority of them are small and marginal farmers. When you are small and marginal farmer, you don't have that capital to convert your subsistence farming into commercial farming. So again, that will be a big problem. ठीक है, सो अगेन देखो, जब मुझे ये सारे एस्पेक्ट्स पता है, मुझे पता है कि कौन सा नेशनल हाईवे किधर से जा रहा है, रेलवे लाइन किधर से जा रही है, कैन आई मेक माई आंसर्स मोर स्पेशल, कैन दे लुक मोर लाइक स्पेशल साइंस. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज लैकिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स. और इसके लिए हमें क्या करना है, what is the thing which you have to do for this?
For that, you have to prepare your NCRTs before the class start. If you have prepared your NCRTs well, जब NCRT पढ़ रहे हैं, what will be open in front of me? The atlas. It should be open in front of me. If I can prepare this, और ये literally एक starting के stage में एक तरह से mug up करना पड़ेगा, ठीक है? So if you can sit in the class with this, then what will happen? Your level of understanding will be a notch above others. You will be able to relate many of the things which I will be talking in the class. अब मैंने क्लास में बोला ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, 90% को पता ही नहीं है कि कहां पर है वो, उसका सिचुएशन कैसा है. So till I draw a diagram and show you, you'll not be able to know. Or if I'm talking about mountain building and I give example of some of the mountains, again same thing happens. More than 90% of the students को ये भी नहीं पता है कि रॉकीज और एंडीज कहां पर है. भूल जाओ कि एटलस माउंटेन तो भूल ही जाओ. एंड अगेन व्हेन यू डोंट नो, व्हाट विल हैपन? तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं बनी. रिमेंबर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? मेकिंग दोज इमेजेस इन द माइंड, बिकॉज दोज इमेजेस यू आर एबल टू रिकॉल, नॉट द टेक्स्ट विच यू आर रीडिंग. और उसके लिए बहुत जरूरी क्या है? डूइंग दिस पार्ट, एनसीईआरटी पार्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और ऑलवेज रिमेंबर, वेल बिगन इज हाफ डन. सो जिसने ये अपनी शॉर्टकमिंग को ओवरकम कर लिया, बिकॉज मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ यू डोंट हैव बैकग्राउंड इन ज्योग्राफी, एंड दिस इज द केस एवरी ईयर. मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिलेक्टेड फ्रॉम ज्योग्राफी, उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं होता ज्योग्राफी में. दिस इज द केस एवरी ईयर. दैट मीन्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड. और जिनका बैकग्राउंड होता भी है, उनको खुद पता है कि वो कितने पानी में होता है, ठीक है? दैट इज लिटरली द केस. सो दैट इज वन थिंग, द स्पेशल एस्पेक्ट. और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. ज्योग्राफी में हम हर चीज को स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वेयर इट इज लोकेटेड. हम वही टॉपिक को जो इकोनॉमिस्ट अलग तरीके से पढ़ेगा, हिस्टोरियन विल स्टडी इट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, a sociologist will study it from other perspective. Geography we study it from spatial perspective. When it comes to profit making, suppose मुझे profit बनाना है, and from perspective of suppose establishing a coaching institute, a geographer will look to the ideal location which will bring maximum number of customers. That is the perspective of geography. So space is the central theme of geography. फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटिव साइंस, ठीक है? अब देखो ज्योग्राफी की खास बात क्या है कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं कि इफ देयर इज सपोज एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने वाला बंदा होगा वो ज्योग्राफी का होगा. रीजन बीइंग कि उसको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता है. He knows everything or something on every topic. क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकल तो पढ़ ही रहे हैं. Beside we are also studying resource, we are also studying agriculture, we are also studying industry, we are also studying transportation, communication, even satellites. We are also studying population, which we are also studying about settlements. Population के अंदर भी बहुत सारे social issues पढ़ते हैं हम. Beside, we are also studying regional planning, we are studying political geography, environmental geography, everything almost. So सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ हमें पता है, ठीक है? अब यहीं पर ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. देखो, डू यू रियली थिंक दैट रियलिटी इज सेपरेट? जैसे कि हम पढ़ते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. डू यू रियली थिंक कि रियलिटी भी इसी तरह से होगा, फिजिकल एंड ह्यूमन? कैन यू टेल मी एनी प्लेस टुडे ऑन अर्थ, डू यू थिंक which is
purely natural? Can we identify any place on this earth which can be called as fully natural, 100% natural? There is hardly, I cannot think of any place, because there is no place on the earth which has not been affected by human activity directly or indirectly. Even in the remotest corners, for example, think if human beings are one of the reasons for global warming, can I say, are we affecting indirectly even the remotest corners of the earth? If we were the reasons for acid rain, does acid rain affects even the remotest corners of the earth? Obviously, yes, it does. So there is no such bifurcation in reality. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर. जब हम बाद में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल सी, तुम में से बहुत सारे लोगों ने डार्विन के बारे में सुना होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. डार्विन क्या कहता है? डार्विन सेज दैट species evolve as they adjust to their environment. So because environment keeps on changing, species will also keep on adjusting, and thus they would keep on changing. So this would lead to genetic evolution of the species. This is how the species are evolving. Okay, but this idea was severely criticized, because in this idea there is a conception, very simplistic, deterministic conception, that there is one way impact. Environment is affecting living beings. Let me tell you, since the time living beings have been there on the earth, they have equally impacted the environment as well. So there was birth of another theory which we call it as Gaianism. And Gaianism what says? It gives an example, and it gives example, for example, it says that since the birth, first the species which were born were the prokaryote bacteria, which were chemosynthetic bacteria. They loved anaerobic conditions. That means conditions which were devoid of oxygen. But what they did, these bacteria released lots of oxygen. They were born in water. Over a period of time, they made water so much oxygen rich that they themselves couldn't survive. And they evolved into eukaryote bacteria. बाद में देखेंगे कि in the atmosphere, the oxygen that we have, actually it has been added through the process of photosynthesis. That means the natural thing which we know today, it has come from where? It has come from the living beings. And like other species, can we say human beings today we are causing global warming, whatever? But like other species have changed the environment, we are also doing. Although definitely the rates are different because we have a level of technology. So the difference of what you call it as physical and what you call it as human, it is very subjective. Where the buck stops, where the boundary can be drawn, it is not very clear. There is lots of overlapping. Reality is actually very complex. And if the reality is so much complex, don't you think reality should also be studied as it is? But देखो, सारे subjects क्या करते हैं? Most of the subjects are process oriented subjects. They specialize in certain processes. Like for example, take physics. So physics, can I say, is studying the physical conditions, the physical laws of the non-living world. Internal laws, they are studied by chemistry. Biology is essentially studying the living beings. Similarly, in human aspect, there are different subjects which are studying one thing specifically. Okay? Now, does the reality also, as it is the reality also bifurcated like this? Definitely not. For example, एक और example लेते हैं, human example. Today, tell me, if we look into poverty in India,
who are the most poor people? Which group of people are the most poor? Can we classify, like, can we say there is greater poverty in rural areas? Rural areas, there is greater poverty. If we go into the caste segregations, can we say that maximum poverty is found in the lower castes? ठीक है? Also, if you look into the possessions, etc., you'll find that most of the land holdings in rural areas would be held by, can we say, upper caste? So tell me, which came first, the egg or the hen? कौन पहले आया? Was the caste the main factor which created this difference, or the possessions, the poverty levels which created these differences? What came first? Or what is the cause and what is the effect? Can we say it is very difficult to segregate? It is very difficult to segregate what is social and what is economic. They are all very complexly interrelated to each other. If I just follow one perspective, I am doing injustice to reality. Because reality doesn't lies in compartments. We have created those compartments because human beings have limited mind. Our mind can do limited number of calculations per minute. And that is the reason, we today are taking help of supercomputers, which can accelerate this computing, decision making. Okay? So because we had limited cranial capacity, we divided the reality in compartments. Because अगर बहुत complex है कोई चीज, अगर suppose करो कि मुझे कुछ घर में रिमोट खराब हो गया या कुछ खराब हो गया, तो क्या करूंगा? सबसे पहले उसके एक एक पार्ट को चेक करूंगा, because I don't know how it works. So first I look how it works. So same thing, we started to study the compartments. But does those compartments individually represent reality? Study of those compartments alone would be very similar to what you would have heard about this, that few blind people were asked what the elephant looks like. So whatever they got hold of, whether it was their trunk or the leg or the tail or the ears, they could say that the elephant looks like this. But was the elephant actually like that? Definitely not. Elephant was very different. That means there is reality which is more complex. So should there be a subject which should devote itself to study of the reality as it is, which can import from all these different disciplines, the work done in different disciplines, and combine them at one place and try to find out how they are interrelated to each other? ठीक है? So ये काम कौन करता है? This work is done by geography. Geography क्या करता है? Integrate करता है. बहुत से जो हम theories पढ़ेंगे, these theories you will also study in economics. These theories you will study in sociology. You'll study in demography. So geography के पास actually अपनी कोई theory नहीं है. Majority of theories geography ने क्या किया है? Import किया है. जो हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं वो सब जियोलॉजी में बना. क्लाइमेटोलॉजी में जो पढ़ते हैं वो सब मेट्रोलॉजी से आया. ओशनोग्राफी हाइड्रोलॉजी, बायोजियोग्राफी फ्रॉम बायोलॉजी. So what it does, it imports all these concepts together and tries to see, इनको integrate करता है and it tries to see how the reality is. ठीक है? और इसी सेंस में ज्योग्राफी जहां पर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, this is referred to as regional geography, where you study about a particular region. ठीक है? Where essentially you are studying about a particular region, like India. So India, paper 2, Indian geography, it is, we are studying space, a particular part of the space. First उसमें हम क्या कर रहे हैं? Components को study कर रहे हैं.
एंड देन देर इज टॉपिक ऑफ रीजनल प्लानिंग, जहां पर हम इन सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक प्लान बना रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दिस इज एसेंशियली द नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड दिस हेल्प्स अस टू डिकोड हाउ ज्योग्राफी इज एसेंशियली डिजाइंड। ठीक है, सो ज्योग्राफी दो तरीके से पढ़ सकते हैं, लाइक हम बाकी साइंसेस की तरह पढ़ सकते हैं। बाकी साइंसेस में क्या होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, अ पर्टिकुलर प्रोसेस। सो लिथोस्फेरिक प्रोसेसेस को अलग पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज जियोमॉर्फोलॉजी। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को अलग पढ़ रहे हैं, वी कॉल इट एज क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के प्रोसेसेस को अलग पढ़ रहे हैं, वी कॉल इट एज ओशियनोग्राफी। ठीक है, बायोटिक प्रोसेसेस, बायोजोग्राफी, ये सब जहां पे कंबाइन हो रहे हैं, वी कॉल इट एज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, देन वी कंबाइन दिस विथ ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और ये दो पॉइंट अगर किसी को समझ में आ गए, he gets the gist of how to score very good marks in geography। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो मैंने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं। एक तो स्पेशल, सो स्पेशल से डज इट मीन्स दैट इफ आई ड्रॉ मोर मैप्स, diagrams, charts, etc., will it fetch me get greater marks? Obviously it will do. Otherwise also देखेंगे बाद में, any type of answer writing is just a communication. You are communicating with the examiner, and if I can make the task of the examiner easy कर दूं उसके task को, he will be happy, and if he is happy I will also be happy. So simple सी बात है, तुमसे अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें एक टेक्स्ट दे दूं जिसमें केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है, and there is another same has been converted into with lots of good diagrams, more logical diagrams में points में divide कर दिया, which one will be more interesting to read? The second one. It will also consume less time। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज द की, और यहां पर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं मैप ही ड्रॉ करूं, बट एज एन एग्जाम्पल क्या मैं लोकेशन लिख सकता हूं कि ये यहां पर मिलता है? ठीक है, अब मुझे लिखना है स्ट्रक्चर का रोल, और मुझे पता है कि different type of rocks will give rise to different type of structure. Like basalt is a rock which has differential resistance to erosion, and thus what it does, it gives rise to this kind of ridge and valley topography. So for example, here there was a plateau, and this plateau has been cut by the rivers forming their V-shaped valleys, and thus it has become now like this. So it looks like valleys and mountains। अब मैं इसको बताया मैंने, बट साथ में मैं अगर एग्जाम्पल भी दे दूं कि फॉर एग्जाम्पल दिस सेम थिंग इज फाउंड इन महाराष्ट्र प्लाटू, वेयर अजंता, बालाघाट, सतमाला एंड हरिश्चंद्र रेंजेस आर सच टाइप ऑफ रेंजेस। विल इट क्रिएट अ ग्रेटर इंपैक्ट? यस इट विल डू। ठीक है, सो दैट इज द लोकेशन एस्पेक्ट जो मेरे मार्क्स को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, then coming to the second very important part, and second very important part is the integration। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में कई चीजें हो सकती हैं। पहला इंटीग्रेशन ये हो सकता है, वी यूज थ्योरीज इन explaining the patterns or geographical patterns। ठीक है, geographical patterns। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने यहां पर बात किया क्रॉपिंग पैटर्न, अर्बनाइजेशन लेवल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ठीक है,
इसमें मैं एक और चीज ऐड कर सकता था, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब देखो, a theory which explains, there are several viewpoints which explain the relationship between population and resource. ठीक है, and they can be summed up into this formula, I is equal to pat. So impact of human on the environment is equal to, or resource exploitation is equal to, population size, affluence levels, that means consumption level, and technology. तीन चीजों पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन साइज, एफ्लुएंस लेवल एंड टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं, डज इट फिट हियर? क्रॉपिंग पैटर्न, is it related with technology? Green revolution, is it related with technology? Yes. Industrial centers, is it related with technological development? Yes. Urbanization levels, can we say it is related with affluence? As we get urbanized, our consumption pattern changes, our culture changes. So it is manifestation of what? It is manifestation of affluence, and definitely the population growth, the population size. ठीक है, अब एक चीज जो स्प्रेड थी, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको अरेंज कर दिया, इंटरलिंक कर दिया एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ साइंस? क्योंकि हर जगह मैंने साइंस वर्ड यूज किया। कैन आई से साइंस इज समथिंग which has universal explanations, universal theories? That is science. I know that this, if I drop this pen, it will go down. Reason we know, it is gravity. So there is a universal theory. So in science we have explanations, and these are theoretical explanations which are universal. So gravity is working everywhere on the earth surface. ठीक है, so when I am doing this, one, I am integrating. Second, am I also showing geography to be a scientific subject? Obviously I am doing showing that geography is a scientific subject, which is always एक debate होता है social science और sciences में, natural sciences में, because in universities you will find कि जो natural scientists होते हैं उनका status थोड़ा ज़्यादा high होता है, because they are like they are doing something science. Social scientists जो होते हैं उनको एक second grade citizenship मिलती है, or it is in terms of the allotment of research money, etc., etc. So it is everywhere, this status you'll see. So there is always a fight. Social scientists always try to say कि हमारा भी subject science है, because we are using scientific methodology. Okay, so if you can do that, you will definitely be rewarded. You can show that your subject is science. तो theories हम कहाँ पर पढ़ते हैं? पेपर 1 में। जोग्राफिकल पैटर्न्स कहाँ पर पढ़ते हैं? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। पेपर 1 में हम मोस्टली वर्ल्ड के जोग्राफिकल पैटर्न्स पढ़ते हैं, एंड पेपर 2 में वी स्टडी इंडियाज जोग्राफिकल पैटर्न। ठीक है, सो दीज थ्योरीज कैन बी यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग दोज जोग्राफिकल पैटर्न्स। ठीक है, ये सब बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे ऐसा कि ऐसा करना होता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी बोलते थे कि क्या करना होता है, ये यू हैव टू लिंक थ्योरीज विथ दीज पैटर्न्स। बट किसी से भी पूछ लो, टीचर से पूछ लो, सीनियर से पूछ लो कि कैसे करना होता है, एक एग्जाम्पल दे करके दिखाओ, तो नो वन कैन डू दैट। बट डेफिनेटली वी विल सी इन आवर क्लासेस, दिस विल बी वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, सो एक चीज। सेकंड, अब जब हम इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी बिकम स्मार्ट and we don't commit the same mistake which was committed by Darwin, looking into only one-way relationship. Tell me, can this be also the geographical patterns? Can they be used to explain or provide validity to the theories as an examples or case studies? हो सकता है?
ऑब्वियसली हो सकता है. सपोज सिलेबस में मेंशन है, क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस में, दैट देयर इज योर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, थॉर्नथवेट एंड त्रिवार्था. ठीक है, अब ये मेंशन है. इंडिया के पेपर में मेंशन है क्लाइमेटिक रीजन्स, पेपर 2 में, वेयर यू अगेन स्टडी द वर्क ऑफ दीज 3 फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव. ठीक है, अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, सपोज एनी वन ऑफ देम, कोपेन के ऊपर आया या फिर त्रिवार्था के ऊपर आया या थॉर्नथवेट के ऊपर आया, मेनी टाइम्स कंपैरिजन आ जाता है. कैन आई यूज ऑल्सो what I have learned in India as an example in paper 1 even? Will it give me marks? Obviously it will do. Paper 2 पूरा का पूरा क्या है? Case study है of the concepts that you have studied in paper 1. बार बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कहां से केस स्टडी पढ़ें, कहां से केस स्टडी पढ़ें. यार 70% ऑफ द केस स्टडीज तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो इन पेपर 2, जस्ट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम. बिकॉज देखो, एक चीज होती है कि आई नो, अब मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें यहां पे सिखा दी, अभी भी मैंने तुम्हें एक दो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बता दी. नाउ यू कैन हैव टू टाइप ऑफ एटीट्यूड्स. वन इज कि अरे समझ में आ गया, नाउ आई विल डू, आई विल बी एबल टू डू, और एग्जामिनेशन में पहुंच गए बिना प्रैक्टिस किए कि कर लेंगे. होता नहीं है. यू विल स्ट्रगल वेरी हार्ड in that pressure cooker situation. But एक दूसरा एटीट्यूड है where I actually practiced. वो लिंकेजेस जो लिखने हैं वो पहले से बना के रखे हुए. सेकेंड केस यू विल बी एबल टू यूज व्हाट यू हैव लर्नड. फर्स्ट केस में भूल जाओ. कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट केस वाले स्टूडेंट्स करते भी हैं तो मे बी दे विल डू रॉन्ग इंटरलिंकिंग एंड लेटर दे विल गेट सरप्राइज कि इतने कम मार्क्स क्यों आ गए. So all these things have to be done beforehand only. ये पहले से रेडी होने चाहिए. So geographical patterns and को theories में यूज कर सकते हैं. ठीक है. And definitely the third is the contemporary issues which can be used as the case studies and examples to study or to explain geographical concepts and theories. Geographical concepts and theories, which will definitely show to the examiner that what you are studying is something which you can also apply in your real life. ठीक है? You can link what you are studying with what is happening around you. Tell me, is this the trait we need from a civil servant? कि उसने अपनी लाइफ में जो सीखा है वो अपने सर्विस टर्म में उसको यूज कर सके? Yes or no? And that is if you are able to show in the examination hall, again that will be appreciated. So होता क्या है कि we find पेपर 2 का स्पेशली अगर मैं बताऊं तो आई हैव एनालाइज कि मार्क्स कैसे मिलते हैं स्टूडेंट्स को. वी फाइंड कि जिन स्टूडेंट्स ने गुड डायग्राम्स वगैरह बना दिए और पेपर मोर और लेस 90% अटेम्प्ट किया है, दे विल गेट अराउंड 110-120 मार्क्स. दोज हु हैव आल्सो यूज्ड दिस कंटेम्पररी इश्यूज, करंट एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज, दे विल गेट मार्क्स अप टू 140 तक मार्क्स उनको मिल जाते हैं. जिन्होंने ये वाली लिंकिंग भी कर रखी है, दोज आर द पीपल हु आर क्रॉसिंग 150. ठीक है. सो इट इज वेरी क्लियर कि मार्क्स जब अलॉट हो रहे हैं तो दे आर लुकिंग इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ वेल यू हैव रिटन. ठीक है. सो दिस इज द वे वी विल बी डूइंग, वी विल बी कंप्लीटिंग इन आवर क्लासेस. दिस इज द वे वी विल बी मूविंग ऑन. ठीक है.